So everyone note down. Let's start from number 17 of partial fraction, which is number 19 from the PDF, which I have forwarded you. Okay. So everyone note down. Question number 7. So question number 7 is 1 minus cos x divided by cos x into 1 plus cos x. All right. Just tell me one thing, Yes. everyone. What do you mean by a partial fraction? Partial fraction का मतलब क्या होता है बताओ तो? Partial fraction is a method of splitting the total fractions into smaller partials, right? Small छोटे-छोटे fractions. Yes. अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, like for example, if it was 1 minus y by y into 1 plus y, तो देखो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इजीली अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं? इसमें पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही हम लोग अप्लाई कर पाते हैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, but we are not able to apply because we have everywhere cos x. But what we'll do, you all know that partial fraction is not methods of integration. क्या partial fraction integration करने का कोई method है? No, नहीं. sir. Actually, it is an algebraic method of splitting the total fraction. So what we'll do just now is we'll consider cos y x as y. We will consider cos x as y, and then we will apply partial fraction. Okay. So this is not substitution. Please note down. This is not substitution that हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं, है कि नहीं? वी डिफरेंशिएट, तो तुम्हारे दिमाग में ये जरूर Yes. बात होगा, बट दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशन. प्लीज नोट डाउन. दिस इज ओनली वी हैव कंसीडर्ड cos x as y जब तक हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ये पार्शियल फ्रैक्शन तक ही है. एक बार पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस से y की जगह हम cos x लगा के फिर इंटीग्रेट करेंगे. सो यू विल गेट a डिवाइडेड बाय y प्लस b डिवाइडेड by 1 बाय plus. y प्लस 1. Okay, now let us take LCM. So the LCM is y into y plus 1. So you have a times y plus 1 plus b times y. Y into y plus 1 gets cancelled. Now we'll determine the value, calculate the values of a and b. Now to calculate the values of a and b, what we'll do now? Once we'll put the denominator of a, which is y, equal to 0. मतलब y का value एक बार 0 put करेंगे हम लोग. Now these things are very clear. Yes. So 0 plus 1 is 1. 1 into a is a. 0 into b is Equal 0. to So 1. the value of b is how much? 1. Now let us put the value of y equals to minus 1. If I put y equals to minus 1 here, B is equal to minus 2. we'll get 2 on the left. Minus 1 plus 1 is 0. 0 into a is 0. Minus B. तो b का वैल्यू यहाँ से आ गया minus 2. Now let us put the values of a and b. Putting the values of a and b in equation number 1. So we have 1 minus y by y into y plus 1 equals to a by, that is 1 by y minus 2 by y plus 1. But एक बात बताओ, क्या मैं y के टर्म्स में इंटीग्रेट कर सकता हूँ? No, sir. Because this is not substitution. Is this clear? To make partial fraction easy, we have just considered cos x as y. Okay. Now we will replace once again at the place of y cos x, and now we will start integration. Cos x की जगह y लगा के अब हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे. So we find that I becomes integration of 1 by cos x minus 2 by 2 into 1 by cos x plus 1.
To integrate 1 by cos x, we have to write sec x. And to integrate 1 plus cos x, we can rationalize this. All right, we can rationalize this and integrate. What is integration of sec x? It is log of mod sec x plus tan x. और यहाँ पे अगर हम rationalize करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 minus cos x divided by what is a plus b into a minus b? A square minus b A square. square minus B square. So 1 minus cos square x is equals to sin square x. All right. 1 plus cos x into 1 minus cos x is 1 square minus cos square x. And what is 1 minus cos square x? 1 minus cos square x is sin square Sin x. square. Now we can split this with cos square x. Sorry, it is sin square x in the denominator. Or cos square x, what? So sin square x is in the denominator. Okay. Okay. Okay, 1 by sin square x, cos x by sin square x. So 1 by sin square x becomes cos x square x. And cos x by sin square x becomes cot x into cosec x. है कि नहीं? Cos x by sin x is cot x. 1 by sin x Yes. is cosec x. What is integration of cos x per x? It is minus cot x. Cot x cosec x का integration minus cosec x. Okay, please copy down first. This is the answer. एक बार इसको copy करना सबने. So can you even show the second page? Everyone note down the next sum. And this is very, very important type. It is a very, very important type sum. I want everyone to pay attention. Basically, we can say this is the last type. Now, everyone listen here very carefully. एक बात बताओ मुझे. Suppose you have x cube plus 3x square plus 5 and you are dividing it by x cube plus 5x plus 7. Now, can I divide 10? Can I divide this expression by x cube plus 5x plus 7? Yes? मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं इसको divide कर सकता हूँ? Yes, tell me everyone. Yes, sir. क्या division यहाँ पे possible होगा? If the question is क्या division possible होगा तो तुम्हारा question का answer क्या होगा? Yes. Because the degree of numerator is 3, the degree of denominator is also 3. So as the degree of numerator and denominator both is equal, we can divide. Now, what is multiplied to x cube to get x cube? Tell me. 1. Now, everyone note down one thing. When the degree of numerator and denominator is both equal, in those division is only performed in one step only. Do you agree what I'm saying? क्या अगर Yes, तुम sir. लोग ये अग्री करते हो कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री बराबर होता है तो डिवीजन एक स्टेप से ज्यादा नहीं होगा? डू यू अग्री एवरीवन? जैसे मान लो सपोज Yes, यहाँ sir. पे x टू द पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 7 को डिवाइड करें अगर हम लोग x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 7x प्लस 6 है तो डेफिनेटली तुम्हारा डिवीजन सिर्फ एक ही स्टेप में होगा. कैसे?
जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, डिग्री लेस हो जाएगा, रिमाइंडर का डिग्री लेस हो जाएगा, एंड देन विल स्टॉप डिवीजन. यस एवरीवन? सो दैट्स व्हाई प्लीज Yes, नोट sir. डाउन that if the degree of numerator and denominator in a polynomial is equal, then division is only performed in one step only. एक स्टेप से ज्यादा डिवीजन होगा नहीं, क्योंकि एक स्टेप के बाद जब डिवीजन होगा ना, तो वो रिमाइंडर विल बी, डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर. प्लीज नोट डाउन एवरीवन. क्या ये बात सबको समझ में आया मैं क्या बोला? Yes, sir. Let me take one more example. Suppose we have x square minus 5x plus 6, and suppose if we divide this by x square plus 2x minus 3, if we divide, suppose, you know that the degree of numerator is equal to the degree of denominator. So what I am saying, this one step division, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि डिवीजन सिर्फ एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, मतलब डिवीजन इसके आगे कंटिन्यू नहीं होगा. क्योंकि अगर डिग्री बराबर है तो एक स्टेप के बाद जो रिमाइंडर होगा, उस रिमाइंडर का डिग्री विल बी ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर. जैसे यहाँ डिग्री 1 आ गया, यहाँ पे डिग्री 2 है. तो मैं ये बात कर रहा था. इस केस में हम क्या करेंगे, देखो एक बार ध्यान से. एक स्टेप डिवीजन होता है, मैंने ये बताया. अब देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन में, तो लिसन हियर एवरीवन. जैसे एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हियर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ The न्यूमरेटर? 3. Because if you multiply x minus y 1 into x minus 2, it will be x square. और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट को x minus 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो हाईएस्ट पावर x to the power 3 होगा. अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3. So as you find that the degree is equal, so we can, if we divide, how many, कितने स्टेप पे डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा? एक स्टेप One पे step. डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा. बट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम खुद सोचो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो तुम ये सम को सॉल्व करने के लिए अगर तुम डिवाइड करोगे, तो सबसे पहले तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन तीनों को, ठीक है? और उसके बाद इस तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. सम विल बिकम लेंथी, मतलब यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होगा, है कि नहीं? यहाँ पे टाइम लग जाएगा. तो हम लोग इस टाइम को बचाने Yes. के लिए, टू आई मीन दिस रिड्यूस द टाइम, इस सम में हम क्या करेंगे देखना एक बार. देखो यहाँ पे मैंने एक रूल दिया है, सबको ध्यान देना. एक स्टार देके एक रूल दिया है मैंने. x प्लस माइनस a, x प्लस माइनस b, x प्लस माइनस c डिवाइडेड बाय x प्लस माइनस d, x प्लस माइनस e, x प्लस माइनस f. अगर ऐसा होगा तो क्या करेगा तुम लोग? यू कैन राइट डायरेक्टली 1 प्लस. वाई 1 प्लस? क्योंकि तुमको पता है कि जब डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इक्वल होगा, तो डिवीजन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, होगा कि नहीं? एंड वी कैन राइट 1 Yes, sir. प्लस a डिवाइडेड बाय the first factor, all right, plus b divided by second factor, plus c divided by the third factor. All right everyone? तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, तुमको पता है कि जब डिग्री बराबर होता है, तो डिग्री बराबर होता है तो हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना चाहिए. बट दिस इज अ स्पेशल रूल विच विल हेल्प अस इन सॉल्विंग दिस. कैसे? क्योंकि डिवीजन के बाद यहाँ पे 1 प्लस आएगा कि नहीं, बताओ तो. जब हम डिवीजन यहाँ पे करेंगे तो रिमाइंडर जो है, Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो जो पूरा जो चीज है ना, डिवीजन का पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट, इस पूरा को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना दिया गया. समझ में आया तो बात? उस पूरा डिवीजन के पार्ट को कंबाइन करके एक फॉर्मूला में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया. दैट इज, इफ यू हैव एनीथिंग ऑफ दिस टाइप, you can directly write down, you can directly write down 1 plus a divided by the first factor, that is x minus 4, b divided by, you know, every factor is linear, x minus 5, and c divided by x minus 6. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब ये सम को नॉर्मली बाकी जैसे सम को सॉल्व करना है. कैसे? पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड का The डिनोमिनेटर same as left hand side. सेम एज लेफ्ट हैंड साइड. That is x minus 4, x minus 5, and x minus 6. What is multiplied to 1 to get this whole thing? It is x minus 4 into
x minus 5 into x minus 6. a में क्या, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, पूरा चीज आएगा x minus 5 into x minus 6. What is multiplied to x minus 5 to get this whole thing? X minus 4 into x minus 6. Now what is multiplied to x minus 6 to get this whole thing? It is x minus 4 into x minus 5. So you find that denominator gets cancelled, and what is the result? It is x minus 1, x minus 2, x minus 3 equals to x minus 4 into x minus 5 into x minus 6 plus a times x minus 5 x minus 6 plus b times x minus 4 x minus 6 plus c times x minus 4 into x minus 5. Mark it as 2. अब हम क्या करेंगे, देखो a के डिनोमिनेटर में क्या है, x minus 4. तो यहां से x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 4. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? a के डिनोमिनेटर में x minus 4 है, इसको अगर मैं 0 से इक्वलाइज करूं तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, 4. अगर मैं हर जगह 4 पुट करूं तो ये 4 minus 1 3, नोट डाउन, 4 minus 1 3, 4 minus 2 2, 4 minus 3 1. So what is the result? 6 on the left. 4 minus 4, this will become 0, this will become 0, and this will become 0. यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2. तो ये हो जाएगा 2a equal to 6. That is the value of a is how much, 3. Now put the value of x equals to 5. Are you getting my point? x minus 5 को 0 से इक्वलाइज करूँ तो 5 minus 1. So b equal to minus 24. What do you get on the left hand side? Can you tell me? So 24. 24, and on the right hand side, Minus 5 b. minus 5, this becomes 0, this becomes 0, this becomes 0. Minus b. You'll get minus b on the left, right? Yes, sir. और जब मैं यहाँ पे c का वैल्यू पुट करूंगा, 60. x का वैल्यू 6, sorry. If I put x equal to 6, 6 minus 1 is 5, 4, and So 3. 60 on LHS. This 60 on LHS. RHS, So this will 2c. become 0. How much? 2c. So the value of c becomes 30. 30. Now put the value of ABC in equation number 1. And just you need to integrate them. Put the value of ABC in equation number 1 and integrate this. Is this clear to everyone? Yes. Now putting the values of A, B, and C in equation number 1, we get x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 divided by x minus 4, x minus 5, x minus 6 equals to 1 plus a divided by, what is the value of a? 3. So 3 divided by x minus 4 plus b, what is the value of b? Minus 24. Yes. So it is minus 24 divided by x minus 5, and the value of c is 30, right? 30. 30 divided by x minus 6. So at the end, let's integrate now. So I will be integration of 1 dx plus 3 integration of 1 by x minus 4 minus 24 integration of 1 by x minus 5 plus 30 integration of 1 by x minus 6. So what is integration of 1 dx? It is x. Then you have log of mod x minus 5 plus 30 times log of mod x minus 6. All right, copy down first. Just copy down everyone. सबको समझ में आया तो ये वाला पार्ट? Now question number 19 का सम नंबर ए. मैं सारा सम्स में ना कुछ 2-3 लाइन बता दूंगा, तुम लोग इसको कंप्लीट करना खुद से, ठीक है? Like we have sin 2x
minus 3 cos x, because types are over. Okay, all the types are over. The only thing which you have to do is practice. ओके, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो पहले का डाउट क्लियरिंग है वो मैं एक बार भेज दे रहा हूँ, थोड़ा मेहनत करो। एग्जाम का इतना सेकंड टर्म में थोड़ा प्रेशर हो गया सबको, आई नो दैट। एग्जाम का इतना प्रेशर नहीं होता तो मैं ऐसे नहीं, मतलब मैं एकदम आराम से ही जाता। एग्जाम का प्रेशर है, क्या उपाय नहीं है अभी। दोनों में कॉमन क्या है? cos x. So what is left? 2 sin x minus 3. Now see, if you just observe properly, this is in terms of sin function. लेकिन डिनोमिनेटर देखो, ये बाहर में क्या है? cos x. ये है साइन के टर्म्स में, लेकिन बाहर में क्या है बताओ? cos x. तो हम एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर के ये पूरे एक्सप्रेशन को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या है? राइट, cos square x is 1 minus sin square x. All right. Now let us Yes. simplify the denominator part. If you simplify the denominator part, you will get sin square x in the denominator minus 4 sin x plus 4. All right. अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, बताओ तो सबसे पहले। So sin x equal t. If you put sin x equals to t, this cos x will be eliminated. So we have cos x dx equals to dt. So I will be equals to cos x into dx will be replaced with dt. Sin x की जगह t लगा दो तो ये हो जाएगा 2t minus 3 divided by t square minus 4t plus 4. अब बताओ तो मुझे ये सम को कैसे करना चाहिए? टेल मी, टेल मी। यस, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे बताओ तो? ये तो डिनोमिनेटर तो फैक्टराइज ही नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए Then डिनोमिनेटर में ax plus b by दो चीज का प्रोडक्ट होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कम से कम दो चीज होना चाहिए, दो फैक्टर। बताओ तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? quadratic function we use. जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। वेरी गुड। देखो ये हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक हो गया तुम्हारा, अच्छा मैंने ठीक लिखा है ना? देखो तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना कहीं? प्लीज चेक वंस। इज देयर एनी कैलकुलेशन मिस्टेक एनीवेयर? नो। सो इसका हमारे पास दो उपाय है। एक में हम लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, याद है तुम लोग को लीनियर बाय क्वाड्रेटिक? यस सर। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं आराम से, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिख के एडजस्टमेंट्स करके। अच्छा, डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर है क्या? देखो देखो। No sir. Are you sure? Oh yes sir, it's perfect sir. Now you can apply partial also. हमारे पास दो ऑप्शन है, पार्शियल से भी कर सकते हैं और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियल से सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, अगर यहाँ पे हम लोग पार्शियल से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2t minus 3 by t minus 2 का होल स्क्वायर equals to a by how much? Tell me. a by t minus 2 plus b by t minus 2. रिमेम्बर, याद है ना सबको को ये चीज? ये है लीनियर का, लीनियर के पावर पे 2 है, तो याद है ना रूल नंबर 2? सबको याद है ये चीज? Yes. तो ये तरीके से कर सकते हो। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है? मतलब मुझे सम नंबर 19 में कुछ नया बताना नहीं है। इन सम नंबर 19 आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें करना क्या है, बस तुमको दो तीन लाइन सोचना है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना। अब मुझे कोई बता सकता है सम नंबर बी में क्या करना चाहिए? थिंक एंड टेल मी, तुम लोग मुझे बताओ। पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? Sir, we'll write sin 2x as 2 sin x cos x. Sir, then we'll take sin common and then we'll take sin x as t. We will write sin 2x as 2 sin x cos x. We will take sin x common. So you'll get 1 minus 2 cos x. Now बता सकता है कोई क्या करना चाहिए? बताओ तो इसके बाद। Anyone? देखो यहाँ पे 1 minus 2 cos x है और यहाँ पे आगे sin x है। So let us multiply numerator and denominator by sin x.
पता है इससे फायदा क्या होगा? तो इससे क्या होगा? अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin x से मल्टीप्लाई कर दें तो बता सकते हैं इसमें क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि sin स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब So now बताओ we'll कोई। take cos x as t. Now we'll take cos x as t. Okay, now putting cos x equals to t, तो ये हो जाएगा sin x dx equals to minus dt. So I will become sin x dx will be replaced with minus dt. All right. अब मुझे कोई बता सकता है इसमें हम पार्शियल लगा सकते हैं अभी क्या? No, sir. Why? Sir, 1 minus 2t won't be in partial. 1 minus? Sir, how will we use partial for 1 minus 2t? Why not? What is the problem? This is a linear factor. Why can't we apply partial here? What is the problem? Sir, we saw for x, no, sir, no coefficient of x. X plus minus a, x plus No, minus but you can no. I said you're not. I never mentioned that the coefficient of x cannot be other than 1. It can be anything. Oh, okay, sir. The only thing is that rule number 1, rule number 2, rule number 3, when to apply rule number 1 if it is a linear factor, and when to apply rule number 2 if it's a linear whole to the power some whole number, and third one when we have quadratic we apply rule number 3. So यहाँ पे 1 minus t square को 1 minus t into 1 plus t लिख सकते हैं। एक काम Yes, करते sir. हैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके इस माइनस से कैंसिल कर दो। So we have t minus 1, t plus 1 and 1 minus 2t. Now क्या मैं इसमें पार्शियल नहीं लगा सकता हूँ? क्या दिक्कत है इसमें पार्शियल लगाने में? So we can. Yes, it's a linear factor. All the factors are linear. So we can definitely apply partial fraction. So it is a by t minus 1, b by t plus 1, and c by 1 minus 2t. Okay? इसके आगे तो हो जाएगा ना सब कोई का? Yes? Yes. अच्छा एक बात मुझे बस बता दो तुम लोग। What is integration of 1 by 1 minus 2t? Let me hear from you. बताओ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? Sir, minus half log inverse of log of mod 1 minus 2. समझ में ना क्यों? अच्छा ये माइनस हाफ कहाँ से है बताओ तो? t Sir, का कोएफिशिएंट का inverse रेसिप्रोकल, of differential. log t का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल, या फिर बोल सकते हो डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल। ऑलराइट एवरीवन, तो ये है नंबर बी, ठीक है? मतलब मैं बोल रहा हूँ ना सारा सम जो एक ही जैसा ही है। ओके, यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, ओके, एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज दैट इज नंबर 19 का एंटायर थिंग। आई एम सेंडिंग यू ऑल द डाउट क्लियरिंग ऑफ 1 to 9, 11 and also the questions that is number 11, 12, 13 and 14. Okay, so please make sure that you'll complete this entire thing and get ready for one test of indefinite integral. I'll take one test of indefinite integral. Okay.